Okay, now see, this is your fifth lecture series on current trends in IT sector under CLANTech Association. Okay, this topic, that is machine learning with the Python, that we are going to introduce to you, because machine learning topic is a trending topic, trending technology. Nowadays, machine learning is being used in every era, and that's why this is your trending topic, trending technology, and we will discuss about this particular technology. Okay, now this machine learning with Python, so you must be knowing the basics of Python for this machine learning programming. In this introduction to Python, you should know the basic syntax for Python, then various controls are there, then data structure we are using in the Python, then various modules we are using in the Python. So how this particular module is being implemented with the help of this machine learning, that you have to understand in this lecture. Okay, so this is the start of your introduction to machine learning in Python. Okay, so you can see the image, how this particular concept is being incorporated in this particular image. Then in this introduction to Python, what is Python, that you have to understand. And this is nothing but the multi-purpose programming language. Means why it is called as multi-purpose, because we can use GUI programming, we can use the web development using Python, then we can use the scripting languages with the Python. So many applications of Python is there. Along with this one, we can use the object oriented programming. Then this Python is also called as interpreted language. Two types of actually this Python language is there, that is interpreted and shell scripting. So these are the two types of Python programming language which we can use while programming. Then this is strongly typed with the dynamically type, and we will focus on that particular programming on probability, more on readability and productivity. Okay, so this is what about the Python. Now in this Python, you will get the interactive shell scripting. Then for this shell scripting as well, the file programming, you can use various variables, then numbers you can use, then strings are there, list you can use, dictionaries you can use, tuples you can use. So you, with the help of this, these are also the data type, but these are the another special one data type that can come under the data structure. So list, dictionaries and tuples we can use in this Python programming. Then control structures, as you know, that control structure, that is looping concept is there, then conditional statements are there, then functions we can use, function also you are knowing that one, and various procedures we have to follow, like regression and all that particular points here that can be incorporated in the Python programming language. Similarly, classes and instance is there, inheritance concept is there, polymorphism concept is there, various types of modules are available, various types of packages are there. Then exception handling is also included in the Python programming language. Then we are using the standard library for this particular Python programming, that is for basic programming. Library files are not essential but whenever you are doing the advanced type of programming, that is if you are using the mathematical functions, then you have to use the math file, library file, or you can say the header file in the C or C++ programming. So these libraries, which are the standard library that you are using while doing the programs in the Python. That is, if you are using the regular expression, then you have to use the file, that library file you have to use. Similarly, math file you have to use. Similarly, if you are working on the files, then you have to use the operating system file, that is import. You have to import that particular files whenever you are using the terms, you are using the queries regarding this particular Python programming. Okay, so this is what about your Python that you should know. Means little bit, as you know, SY and TY students know the Python programming, quite simple programming language. Just you have to follow some rules while writing program. That is
that is what. Okay, then who uses the Python? Okay, so almost in every era we are using this Python programming language. So which one? So Google is also using, PBS system is also you are using. This is nothing but the electronics and telecom session. Then NASA also using the Python programming language. Then Library of the Congress, then the Onion, then so many uses of the Python is there in the today's era. Okay, now in this Python, we can understand what is the background for that particular Python. That is this technology, you can say the programming. Okay, this is also the open source technology. Python is open source technology. Similarly, your machine learning is also open source technology. So obviously there is a concept of variable type, data types, then operator, then structure is there, then control flow is there, then file input outputs are there, then modules are there. Almost all concepts which are under your programming are covered in the Python. But the simplicity of the Python is that the coding is very short. That is, no need to write the all particular formalities as you are writing in the C++ and all other programming language. Means you are writing hash include, then you are adding the other files, and you are writing main function, then you are writing parenthesis, then opening curly brace, then you are writing data type, then you are declaring variable. Every type of formalities you have, because why it is formalities, because it is a procedure, it is a structured programming language, and that's why you have to write in this way only. That is the programming language. But this is also Python programming language, but so much code is get reduced in this Python programming language. Means there is no use of this data type, since it is inbuilt, because Python will understood that particular data type automatically. Means no need to declare whether it is int or float or char or whatever. Okay, so this is what the introduction about the Python. So if you want to install the Python, then you have to visit the website, that is nothing but www.python.org. This is your official website, and so many bookstores are also available. So if you want to install this particular Python version application, then you have to visit the website. Okay, so this is what the basic of your Python. Means you should learn the things which are essential for your machine learning. Okay, now let us start the concept of machine learning. Now what do you mean by machine learning? Okay, so let us discuss this particular concept, why it is called as a machine learning. As the meaning, learning, you are also learner. Yes, and the small child means from childhood to till your today's qualification, you are going to learn. So what you are learning? So many things are there. You are putting in your brain, and almost all the things you are trying to grasp. Yes, means whatever the things are there regarding technology, regarding general things, every type of things you are going to saturate, store in your brain. And whenever you want to recover that particular things, then immediately you can give the response. This is what called as a learning. But here we will learn machine learning. So what is the machine learning? Like human being, the machine also learns something. It's not like that you are giving the instruction to your program, to your computer, and it will give you the output. Okay, so like this you are doing. Means whatever the knowledge you have, you are writing program, because you know that particular programming style and programming techniques, and you are writing the particular program in the application, and computer is giving you output. So this, irrespective of this particular technique, whether the machine can learn itself or not, yes, definitely your machine will learn something, not something, बहुत कुछ यहाँ पे data store कर सकते हैं हम लोग. That is millions of information you can store in this particular machine. And whenever you want to extract the information, then there are the variety of information is available with you. The best example is Google Chrome. Okay, so from Google, you can extract any type of information, means related information, and along with this one information, so many things are there that also it can be predicted by your machine. So how it will be predicting? Because already the data is stored in this particular machine. So every day,
कैसे होता है कि मशीन लर्न करती है कि यूजर ने सपोज ये दिया आज इंस्ट्रक्शन, उसने स्टोर कर लिया, दूसरा दिया स्टोर कर लिया, तीसरा दिया स्टोर किया, ऐसे मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन योर मशीन एंड व्हेनेवर द एंड मशीन विल रिस्टोर दैट पर्टिकुलर थिंग्स कि यहाँ पे सपोज यूजर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है. Okay, now you are knowing the popular website Amazon and Flipkart. ओके ये दो वेबसाइट तुम लोग को सबको पता है. तो इसमें क्या होता है, अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे तुम लोगों ने प्रोडक्ट सर्चिंग करने लगे, प्रोडक्ट सर्च करते करते तुम लोग को अभी सपोज तुम लोगों ने बंद कर दिया ये एप्लीकेशन, तुम लोगों ने पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कैटेगरी देके प्रोडक्ट सर्च करने लगे. ओके नेक्स्ट टाइम अगर सपोज तुम लोगों ने बंद कर दिया ब्राउजर और वापस ओपन करने लगे वो ब्राउजर, तो क्या होगा, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स है ना जो तुम लोगों ने सर्च किए थे, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर हिस्ट्री योर कंप्यूटर विल गिव यू द मोर ऑप्शंस कि दिस विल आल्सो like to you will like that particular product. ऐसे तुम लोग को यहाँ पे मैसेज आता है. तो ये क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग, because machine will understand your tone, machine will understand your language, whatever you are typing, whatever you are talking. You know now Google Talk also, everyone using this Google Talk, so whatever you are talking, so your machine will understand that talk and it will give you the immediately the result. So how the machine will give you the result? This is the concept of machine learning कि machine learning में यहाँ पे सब information available है, millions of information is available, and from that information wherever it will matches, the extraction of the information will come out like your brain. Means machine learning क्या है, तुम्हारे brain जैसा ही है. So brain में भी क्या होता है, everyone knows, I think that in your brain there are 72,000 millions of neurons are present. Do you know that? Hello? Do you know that one? No. 72,000 yes, 72,000 millions of neurons are available in your brain, and that's why you can keep the data, that is information in your brain. Means so many long year also you can restore that particular information, and whenever anyone suppose asks something to you, then it immediately you can respond that particular answer. So what is this? This is nothing but the machine learning. Means human being is doing that particular action, same way your machine also does that action. That is called as machine learning. Okay, so you can see the picture here, learn from the experience, whichever the experiences you are facing, you are obviously learning in future also. Similarly, same concept is also applicable for this machine also. Then data, learn from the experiences, okay, and follow the instruction. Now robotics here are using in almost all professional companies. Whatever the instructions are stored in that robotics, all the instructions will be done by this particular robotics. Okay, means जैसे human being actions करेगा, जैसे human being decision करेगा, वैसे ही तुम्हारा ये robotics करता है. Why? Because whatever the instructions are there, all type of instructions are stored in this robotics, and that is nothing but the machine learning. So see here, this is what the picture of machine learning. यहाँ पे तुम लोग को जो दिख रहा है ये क्या है, connectivity है, ये है सब neurons in your brain. All types, such type of neurons are present, and whenever if someone asks to you, then specific neuron is activated in your brain and you will give the output. That is what. Okay, and if you are not responding, then what is the meaning of that? The neuron, specific neuron is not activated, still it is in the deactive condition, and that's why you are not responding, or you lost your information, or you forgot your information. This type of information is in the human being. Means some information, somehow the information get lost from your brain, but it does not happen in such a type of machine learning. Machine में ऐसा नहीं होता है, because all the information already be stored, and these informations are stored for permanent purpose. हमारा ब्रेन भी परमानेंट पर्पस के लिए भी है, लेकिन जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है ना, वैसे भी हमारा ब्रेन यहाँ पे कभी कभी काम करता है. सो दैट दे हैव कंपेयर्ड कि योर ह्यूमन ब्रेन and the machine learning, we are comparing कि how the machine works
like your brain. So you can see here, this is your brain and these are the neurons. The neurons are connected to each other because n number of functions, n number of tasks you have to be carried out whenever you are asked something, and because of this neurons connectivity, you will be able to give the answer, to do the activity which you want to do. So this is what the concept of machine learning. Okay, now see, whatever I told you, this is the introduction of the machine learning. Okay, what do you mean by machine learning? So see here, machine learning involves making machines learn like human do. जैसे ह्यूमन बीइंग प्रेडिक्ट करता है, एक्शन करता है, कुछ टास्क करता है, सेम टास्क विल बी कैरिड आउट बाय द मशीन. That is called as machine learning. Means every day machine will learn from you only. You are not learning from the machine. Machine also learn from you. Okay, so machine learning is making the computer learn from studying the data and statistics. Now, what is this the concept? Because machine learning is based on the data set. Now, everyone knows the data set because here the major concept of mathematics and statistical techniques are there. Okay, means Python is the base, no doubt, but little bit information is from Python and so many information from your mathematics and statistical, because we are using the data visualization, we are using the linear regression, we are using the matplotlib also, that is graphical way से भी हम लोग data represent करते हैं, data visualize करते हैं. So how this information is being analyzed, that is nothing but the machine learning, because whatever the data set, now data set may includes array. Okay, because it works on the array only. So data set में क्या होता है, array होता है, matrices होता है. So array में भी क्या है, one dimensional array है, two dimensional array, three dimensional है, multi dimensional arrays है. So use information is stored in the term of array. So that information, how you are going to analyze, because 10 record, 20 record, 50 records are very easy to handle, manage, but millions of billions of records, how you will be managed. So for that purpose, we have to understand this one. मैं 5 मिनट में तुम लोग का ये वापस स्टार्ट करूंगी, क्योंकि यहाँ पे 40 मिनट्स का टाइम पीरियड है ना, तो सेम लिंक पे तुम लोग को ज्वाइन करना है. ओके, so this is what okay, same link पे join करना है तुम लोगों को. Okay, so this is what the machine learning, that we will understand that particular machine learning or study that particular machine learning based on the data and statistical techniques. Machine learning is a step into the direction of artificial intelligence, because machine learning and artificial intelligence is also closely connected to each other. Rather, it is a part of artificial intelligence. That is, machine learning is a part of artificial intelligence. You also studied this technology, artificial intelligence, with the robotics. This also you studied. So machine learning is also a step, or you can say the part of your artificial intelligence. And machine learning is a program that analyzes data, learns to predict the outcome. Okay, so this is what about the machine learning, that is introduction about the machine learning. Now, what are the steps that you have to follow, how you will doing that particular machine learning? So for that purpose, what type of softwares you have to install in your computer system? So Anaconda, this is the software that you have to install. This is also a particular technology, and that you have to install on your computer system. And from this Anaconda, you will able to understand that particular machine learning programs. So machine learning programs are based on 3 main library files. So what are that advanced library files? That is nothing but NumPy, that is called as numeric Python. Then pandas is there, then SciPy is there, that is scientific Python is there, and matplotlib. These are the 4 advanced libraries which we are using in the machine learning, and these 4 libraries are inbuilt libraries in the Anaconda. So you will use this particular Anaconda. So download that particular Anaconda from a particular website, and you will be able to use the application. So which application you will use? So for example, Jupyter is the application, and in that Jupyter you will write the program
with the help of this libraries. That means you have to import that libraries. Are you here? Yes, meeting is ended or continued? Continued, ma'am. Yes, yes, okay. Okay, एक मिनट. Okay, okay. So see, these are the steps for your machine learning programming. So what you have to do, first of all, you have to import the data. So from where you will import that data, you know, CSV file. Everyone knows CSV file. What is CSV? You know, Excel पता है सबको? Excel? Yes, ma'am. So in that Excel, like your files which are in the Excel, that also you can store in the CSV format. Because Excel extension we cannot use in this programming language. We have to use the CSV format. So that CSV file will be used to import the data, because the data is stored in the CSV file and that you have to import. Similarly, whichever the data is related with this particular program, that is data set. Means suppose if you want to obtain the 250 random values in between the 0 to 5, is it feasible to obtain the 250 random values from 0 to 5? With the fractional also you can obtain. So likewise it will become so many values, not necessary that ki 0 to 5 mein kitne values honge. It is not like that. So many values are there, means 0, then 0.1, 0.01, 0.001, 0.2, 0.0.2. So likewise, so many values are stored in the data set. Second, you have to use the cleaning the data. Then split the data. Means how you will split. Splitting means what? If you want to extract some data, some values from this particular data set, then you have to split the data. Then you have to use the model, create a model. Means you have to write a program in that model. Then you have to train that particular model. Then make the predictions. Means what will be the output for this particular program, for this particular visualization. Data visualize कर रहे तुम लोग अभी कि ऐसे ऐसे इमेजिनेशन में जाओ तुम लोग कि इमेजिन करते हैं हम लोग, तो हम लोग को पता चलता है कि नहीं ऐसे होगा ये, बट एक्चुअली क्या आता है तुम लोग चेक करने के बाद ही पता चलता है. सो दिस इज व्हाट मेक द प्रेडिक्शंस कि व्हाट इट विल बी. सिमिलरली you should know the some prerequisites for that particular machine learning. So what is that prerequisites? That is, I already told you that Python basic you should know, then some library files you should know, and after that this predictions you will going to evaluate and improve that particular programming language. So this is what the steps that you have to follow in this machine learning programs. Okay, then see, these are the Python libraries. Now in this Python libraries, I already told you that NumPy, that is called as numeric Python, then pandas is there, then matplotlib is there, and scikit. So this is also the another, but scipy is also there. Okay, scikit learn is also there. So these are the important libraries which are essential for the machine learning programming. Without these files, without these libraries, you cannot write the program. So I will explain you now what is the NumPy, what is the another files in short. What do you mean by NumPy? So this is, I already told you, this is numeric Python. So which is a Python package library for the computation and processing of the multi-dimensional and single-dimensional array elements. Means numeric Python will work on array only, that is data set. So whether this array will be one dimensional or two dimensional or multi-dimensional, doesn't matter.
but NumPy works on the multi-dimensional or single dimensional array only. So what are that advantages of using NumPy for data analysis? So this is, you can see here, NumPy performs array oriented computing. Then it implement a multi-dimensional array. Then it can perform the scientific computation. Then it is capable of the Fourier transformation. Okay, then reshaping and data stored in the multi-dimensional array. Similarly, we can use this NumPy for the linear algebra, linear regression. Okay, so all this particular concept in NumPy can be covered. Then pandas. Now, what is this Python pandas? This is nothing but the open source library, and it provides the high performance data manipulation in Python. So we can manipulate the data in Python with the help of this pandas. Okay, so what are the benefits of pandas? So data representation. It represents the data in a form that is suited for the data analysis through its data frame and series. Then second benefit is clearing of the code, that is clear the data. So this API will allow you to focus on the core part of the code, and it will provide clear and concise code for the users. So in this way, we are using this Python pandas. Now see the program, how you can write the program with the help of this NumPy and the pandas. Okay, so you have to import first of all these two library files called as pandas and NumPy. So import pandas as PD. This first file you have to write, then command you have to write. Then second is import NumPy as NP, because with the help of this NumPy, we will use array. And with the help of this pandas, we are obtaining the information in the series format. Okay, so after that, you have to use a variable called as info and equal to, and NumPy. In that NumPy, you are going to create the array. That's why you have to use the NP, because it is aliasing. It gets aliasing. Import NumPy as NP में क्या किया है? ये NP मतलब aliasing किया हुआ है. NumPy, instead of writing NumPy, you can write NP. So NP dot equal to NP dot array, and in round bracket you have to use the array elements in square bracket. You know that all elements we are writing in the array in the square bracket. Okay, so in this square bracket you will write the elements. Okay, and after that again you are creating the variable for pandas. So a equal to, you have to write PD dot series. This is the method, and using this method and in bracket you have to give the variable which we have created for the array, that is info. And if you are printing that particular value of a, then you can see the output. Okay, like this. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. What is this? This is the number, indexing number. That is the position of for your P is 0. Position of A is 1. Okay, and 2, 3, 4. Likewise, this is the program, and similarly the output for this particular program. Okay, now see, I already told that we have to use the Anaconda for writing this type of programs which you want to learn using this machine learning. So this is the website. You have to give this https://www.anaconda.com and /downloads. In this, you have to select this one, that is download Anaconda distribution. This Anaconda distribution is for Apple, then Windows and Mac OS. So these are the various 3 flavors, and we are using normally Windows. So you have to select the Windows from this particular window. After that, you are going to download the Python version. Okay, now this version for Mac OS, and that's why here they have given Anaconda 2018.12 for Mac OS installer. So Python 3.7 version, and you have to download the version. Okay, but you have to select Windows. If you are using Windows operating system, then you have to use
windows. Okay, after that, this clicking on particular download button, this type of message will be there in front of you, and you have to click on continue button. After that, you have to use this particular means next screen will be displayed, and you have to click on agree, and after that the preparation for the installation will be going on. So once this installation for the Anaconda is done, then you can see in that particular PC or wherever you have installed that particular icon, you can see that is nothing but the Anaconda navigator. So using the Anaconda navigator, you can write the particular programs. Okay, now to write the program, I already told that we can use the Jupyter application, or you can use the VS Code. किस किसी को पता है VS कोड? किस किस को पता है VS कोड? Yes, anyone? हाँ मैम. Yes, okay. So अगर तुम लोग VS कोड में लिखते हो तो इजीली तुम्हारा ये प्रोग्रामिंग होता है. मतलब जैसे .NET एप्लीकेशन है, अभी TY वालों को पता है .NET एप्लीकेशन, जैसे तो छोटा सा कोड अगर लिखते हैं तो उसके साथ बाजू में ही बहुत सारे उसके मेथड फंक्शन आ जाते हैं इजीली. मतलब फटाफट प्रोग्राम तुम लोग वहां पे कर सकते हैं, एंड इवन यू डोंट मेमोराइज दैट पर्टिकुलर सो मच फंक्शन बिकॉज n number of function, thousands of functions are there. Similarly here also the VS code, if you downloaded, then in that VS code also, because it is online, it is not offline, so you can use the VS code for online. जैसे कंपाइलर है तुम्हारा, वैसे ही तुम लोग ये यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे VS कोड भी तुम लोग यूज कर सकते हैं उसके लिए, एंड you can use the particular programming. Okay, so Jupyter also one application, and in that particular application you have to write the program. Now the last topic is nothing but the real life examples. What are the real life examples if you are using machine learning? So the question will be there that where we can use this machine learning, and why it is in a trending form, and why everyone wants to learn this machine learning, then data science, then AI. So all these are the trending topics, trending technologies in the today's era, and we have to learn this particular technology for our bright future. Okay, so what are the real life examples? Okay, now consider the example of your Gmail account. Okay, everyone knows how many sections in your Gmail account? कौन से sections होते हैं Gmail account में? Which are the different categories of Gmail? जैसे कि Primary. Yes, primary, social, अपडेट्स, प्रमोशन, ये सब कैटेगरीज है. तो ये क्या कैटेगरीज है? प्राइमरी मेल में कौन से मेल आते हैं, सोशल में कौन से आते हैं, अपडेट में कौन से आते हैं, प्रमोशन में कौन से आते हैं, उसको भाई कैसे पता चलता है कि यहाँ पे जाएगा, वो वहां पे जाएगा, वहां पे जाएगा. कोई रहता है कि स्पैम में चला जाता है. तो व्हाट इज दिस? मीन्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स योर वे ऑफ टॉकिंग मतलब क्या? हम लोग कंप्यूटर से बात करते हैं. कैसे बात करते हैं? वाया ईमेल ओनली, वाया सम टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन. Okay, so that information is being read by your machine. What you are doing, and for example, I sent mail to some person. Next time, if I want to send that particular mail to same person, then automatically, as soon as I entered a letter, the mail ID will becomes with you. So that mail ID you have to select, and you can, it's not necessary that you have to memorize all the mail accounts for all people. Automatically we can use that particular mail ID, and you can mail the particular information. Okay, so this is what the concept of machine learning. Now spam. Now what is this? In this spam, the unnecessary mails will be stored, because computer knows which are, because content, it will work on the content or the data or the information, and whichever the data, content, information is being read by your machine, that according to that information, it will sort out your mail, and it will be place that particular mail in the social, then promotion, then update, and primary.
ओके, सो दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। तो ये क्या है, ऑटोमेटिकली कैसे होता है, तुम लोग को भी डाउट आता होगा बहुत बार कि ऐसे इधर चले जाते उधर चले जाते। कभी कभी हमारा जो मेन रहता है प्राइमरी वाला जो भी रहता है ना मेल, वो भी दूसरी जगह चला जाता है, तो ये बाय मिस्टेक हो जाता है या क्या है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग कि मशीन लर्न कर रही है, तुम लोग जो यहाँ पे इनपुट देते हो ना, वो मशीन लर्न कर लेती है कि तुम लोगों ने क्या इनपुट दिया है, तुम लोगों ने एंटर क्या किया, और उससे वो मशीन प्रेडिक्ट करती है कि ये मेल कहाँ पे जाना चाहिए, प्रमोशन में जाना चाहिए, अपडेट में जाना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट विल बी स्टोर्ड इन द पर्टिकुलर एरिया, दैट इज सेक्शन में वो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। सो दिस इज व्हाट द example, real example of machine learning. Another example also you can see here, that is I told you Amazon and Flipkart websites are also the real life example. We are using that particular website, and similar products will be identified by machine as you some day you search that particular product, and it will be displayed on the screen. So this is also the live example for machine learning. Similarly, the third example is YouTube. Okay, now this is the trending also application कि YouTube में तुम लोग search करो, everything you will get on the YouTube. Okay, तो जैसे ही अभी तुम लोग सपोज यहाँ पे डाला, ये क्या है, मेडिटेशन म्यूजिक है या तारक मेहता का है, तो या तो तुम लोग को भी सबको पता है कि सीरीज पता होंगे, सबको वेब सीरीज पता होंगे, या तुम लोग कौन सा रामायण महाभारत का जो स्पिरिचुअल जो है सीरीज, वो अगर तुम लोग एक एपिसोड देख लो, आगे क्या आएगा, उसके आगे उसका दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, जितने एपिसोड रहेंगे ना, उतने सब यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट 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 करते सब हम लोग देख सकते हैं एट अ टाइम। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द मशीन लर्निंग। मशीन लर्न कर रहा है कि तुम लोग क्या यहाँ पे इनपुट देते हो, और वो इनपुट जैसे तुम लोग डालोगे ना तुम्हारे सिस्टम से, वो सिस्टम तुम्हारा मतलब वो जो मशीन है तुम्हारा, वो इन्फॉर्मेशन रीड कर लेती है, स्टोर भी कर देती है, और जैसे वो स्टोर करेगी, तुम लोग नेक्स्ट टाइम अगर ओपन करोगे यूट्यूब, तो तुम लोग को उसका अपकमिंग वीडियोस भी आता जाएगा। मतलब अभी जैसे हम लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं पर्टिकुलर चैनल को, अभी भी तुम लोग को हमारी प्रगति कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करना है, हम लोग को सब 6 वीडियो जो है वो हम लोग अपलोड करेंगे, मतलब कर रहे हैं, और तुम लोग को भी वो सब्सक्रिप्शन में लाना है। तो जैसे तुम लोग सब्सक्राइब करते तो क्या होता है, जैसे तुम लोग यूट्यूब ओपन करेंगे, या नोटिफिकेशन भी आ जाता है, क्योंकि वो ईमेल से कनेक्टेड है, तो ईमेल, यूट्यूब, ये सब एक इसमें ही आ जाते हैं। तो इसलिए ये क्या है, मशीन लर्निंग एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल्स। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग, कि मशीन लर्निंग है क्या, ऑटोमेटिकली डेटा इज बीइंग read and predicted the output, means similar type of YouTube videos or similar type of information, it will be predicted by your machine itself, and it will give you the output on the screen. So this is what called as a machine learning. Third example, now you can see this image properly. Yes, क्या दिख रहा है तुम लोग को इसमें? हेलो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं तुम लोग ये पिक्चर में? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं ये पिक्चर में तुम लोग? कार मॉडल दिया है, और कार मॉडल में नंबरिंग भी किया हुआ है, और क्या है? हेलो हेलो, यस मैम। हाँ, और क्या देख रहे हैं तुम लोग कि उसमें ड्राइवर ही नहीं है। सो इज इट पॉसिबल टू ड्राइव अ कार विदाउट ड्राइवर, that is driverless car? Yes. Okay, so these are the upcoming technology, that is upcoming in the sense आया है ये exist है, but machine learning means whichever the points are there, means when to stop your car, then when to accelerate that particular car, then when to break that particular driving motion. So all these particular operations are stored in the technology, and that's why this is the best example of machine learning, कि machine will learn each and everything what you are doing.
जैसे अभी ड्राइवर बैठा रहता है कार में, तो वो ड्राइव करता रहता है, तो कभी क्या टर्न करना है, कहाँ पे फिर यहाँ पे गड्ढे वगैरह है, कहाँ पे हम लोग को ब्रेक लगाना है, कभी हम लोग को स्पीड को कम करना है, कभी ज्यादा करना है. सो ऑल these actions are done by the human being. So whichever the actions, that is, ये कितने actions होंगे अभी, 1000 के भी ऊपर, lakhs of यहाँ पे motions होंगे या actions होंगे. So all such type of actions are stored in the machine, and machine will learn by using that particular action repeatedly. कि अभी ये action use किया, हम लोग को बार बार ये action use करना है, लेकिन कब use करना है ये भी machine को पता चलेगा. So this is the upcoming driverless model car we are using in the future. Okay, so this is what the concept of machine learning, कि यहाँ पे हम लोग कौन से टेक्नोलॉजीज यहाँ पे अप्लाई करके जो प्रोग्रेसिव टेक्निक के ऊपर हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. Okay, so all this entire concept is what about the machine learning. Okay, now this is only the introduction of the technology. कि टेक्नोलॉजी क्या है, लेकिन इसके डीप में अगर तुम लोग को लर्न करना चाहते हैं तो तुम लोग को ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा. मतलब क्या कि यहाँ पे हम लोग को पाइथन ही पढ़ना है. पाइथन में एडवांस जो लाइब्रेरीज है वो क्या है, डेटा सेट क्या है वो पढ़ना पड़ेगा, एरे कैसा वर्कआउट होता है वो, अब जो उसमें मेथड्स है, उसमें फंक्शंस है, वो हम लोग को लर्न करने पड़ेंगे. फिर डेटा एनालिसिस कैसे करता है पाइथन, वो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा. और ये सब कंसेप्ट हम लोग जुपिटर एप्लीकेशन में यूज करेंगे, और ये जो एंटायर प्रोग्राम बनेगा वो हम लोग स्टोर करेंगे मशीन, एंड अकॉर्डिंग टू दैट योर मशीन विल बिहेव. Okay, so this is what the concept of machine learning. Okay, so any questions on this topic, Python and machine learning? First year students, entire technology and programming, you are not familiar with this. So any questions you have? Or SY and TY students, you can ask on the machine learning, programming, or any topic. Any questions if you have, then you can ask. जो एसेंशियल्स है मशीन लर्निंग के लिए वो तुम लोग को मैंने बताया है कि क्या क्या हम लोग को मशीन लर्निंग के लिए यहाँ पे मतलब मैंडेटरी है कि वो हम लोग को डाउनलोड ही करना पड़ेगा. विदाउट दैट वी कैन नॉट डू दिस मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग. ओके, और कहाँ पे हम लोग ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसका भी एग्जांपल्स हम लोगों ने ये दे दिया है. जैसे कि अभी ये तुम्हारे ओला जो आए हैं, या तुम्हारा जो स्विगी आया है, जोमेटो आया है, ये इतने सारे न्यू ऐप जो आ रहे हैं और उससे तुम लोग कुछ भी ऑर्डर करते जा रहे हो. सो एंटायर दिस इज नथिंग बट द मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी. क्योंकि जीपीएस सिस्टम थ्रू तुम्हारा ये जो ओला या उबर है, ये सब टेक्नोलॉजी से जीपीएस थ्रू लोकेशन फाइंड आउट कर लेता है, वो ऑटोमेटिकली साइन हो जाता है, बुक हो जाता है, वैरायटीज है उसमें. फिर बहुत सारे ऐसे अपकमिंग मॉडल्स है, टेक्नोलॉजीज है, एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, एंड यू विल लर्न दैट पर्टिकुलर थिंग्स डे बाय डे. जैसे भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हम लोग SY TY में ये तो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम लोग पढ़ोगे. बट बियॉन्ड दैट बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज न्यू, व्हाट इज करंट ट्रेंड इन योर IT sector, that also you have to focus, and according to that you have to mold yourself. Okay, so whichever the technology, latest technology is there in the IT, you should know that one. That is means by the taking or choosing or opting that particular information technology field, because each and every day you have to update yourself. हर दिन तुम लोग को ये अपडेट करना है. ऐसा नहीं कि चलो हम लोग ये तो क्या तुम्हारा एकेडमिक्स है इसीलिए तुम लोग को ये years and years प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगा ही.
but this is not the way that you are learning the information technology. मतलब ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स होते हैं वो तुम लोग को जस्ट ये टेक्नोलॉजी क्या आया है मार्केट में, कौन सा ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, ये तुम लोग को सब अप टू डेट रहना पड़ता है, तभी तुम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में टिके रहेंगे। अदरवाइज तुम लोग उसी के ऊपर भी होल्ड करोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हारा पाइथन है, पाइथन तुम लोग एकदम बेसिक में पढ़ चुके हो, हाँ, उसमें कुछ भी नहीं है। बियॉन्ड दिस वन तुम लोग आगे जाओगे, मतलब अभी वेब डेवलपमेंट है, तो वेब डेवलपमेंट अगर तुम लोग यहाँ पे जीयूआई प्रोग्रामिंग करते तो वहां तक तुम लोग पढ़ चुके हो माइस्क्यूएल एंड जीयूआई, लेकिन उसके बाद फिर आता है कंसेप्ट स्क्रिप्टिंग का। तो फिर पाइथन के साथ स्क्रिप्टिंग, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी वगैरह ऐसे तुम लोग कंबाइन करके भी, पाइथन यूज करके भी तुम लोग वेबसाइट, इंटरैक्टिव वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, मतलब अभी जो एसवाई स्टूडेंट्स है, तुम लोग टीवाई में जाने वाले हो, तो तुम लोग को भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल एंड फ्रॉम दैट टेक्नोलॉजीज विच यू हैव टू सेलेक्ट फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा अभी जो प्रोजेक्ट होगा वो मतलब लाइव प्रोजेक्ट रहेगा, तुम लोग को खुद को बनाना है। बाकी जो बेसिक लैंग्वेजेस है जैसे एचटीएमएल है, जावास्क्रिप्ट है, या जो ये बाकी सब सीएसएस वगैरह ये जो है ना, ये नहीं चलता है, इट इज नॉट वैलिड for your TY project. .NET application, that is this technology, Java technology, then Android technology or IoT based technology, embedded technology, and this such type of technologies are also allowed to use in your project. Okay, so any doubts? If any doubt, then you can ask. Ma'am, in this slide, what indicates these numbers to the car? Means where the operations can be performed. And for example, if you are braking a car, तो फर्स्ट व्हील पे ही वो कार को ब्रेक करेगा ना, पीछे वाले व्हील पे नहीं। मतलब एक व्हील पे अगर हम लोग ब्रेकिंग कर देते हैं, मतलब ऑपरेशन या फंक्शन वहां पे यूज कर लेते हैं, तो बाकी ऑटोमेटिकली चारों व्हील को वो अप्लाई हो जाएगा। उसके आगे जो है ना, ये ओपन वाला, यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा कार का, मतलब इंजन वगैरह वहां पे जो होता है ना, वो जो 2 और 3 दिया है, फिर वो ये सब जो इम्पोर्टेंट इंजन मॉडल्स है, तो यहाँ से ही इंफॉर्मेशन सब पार्ट्स को जाने वाला है। सो उन्होंने वो हाईलाइट किया, और ऊपर जो दिख रहा है तुम लोग को टॉप के ऊपर, वो है कैमरा। ठीक है, तो कैमरा से वो तुम लोग को दिखाई देगा ना, नहीं तो नॉर्मल ड्राइवर मतलब ह्यूमन बीइंग है तो आंखें है ना, वो आई से देख लेता है, लेकिन ये कार कैसे देखेगी, तो इसके लिए हम लोग को वहां पे कैमरा फिट करना पड़ेगा। फिर वो कैमरा मतलब ह्यूमन बीइंग आए है, तो वो जो पॉइंट हाईलाइट किया, मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। बाकी सब जगह टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जहां जहां पे नंबरिंग किया हुआ है ना, वहां पे ही टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, क्योंकि ब्रेकिंग ये इंपॉर्टेंट है इसमें, फिर कैमरा इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारा इंजन जो है वो ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट ईयर तुम लोग ये सब मॉडल का जो स्ट्रक्चर है ना, वो पढ़ने वाले हो एम्बेडेड सिस्टम में, फर्स्ट ईयर वाले, या तुम लोग एसवाई में भी अभी पढ़ रहे हो। हाँ, यस यस। तो ये क्या है कि इसमें ना सब कंट्रोलर्स होते हैं, मतलब जैसे कि अभी लग्जरियस कार रहेगा, जैसे बीएमडब्ल्यू है या अनदर कार से लग्जरियस वाले, तो उसमें 70 to 100 इतने सारे कंट्रोलर्स डेडिकेटेड होते हैं। और जो नॉर्मल कार होती है ना, उसमें 25 से लेकर 40 तक माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, और मतलब वो इतना लग्जरियस नहीं होती है ना, उसमें बाकी सब फैसिलिटीज नहीं है, जीपीएस सिस्टम नहीं होता है, वीडियो कैमरा नहीं होता है, उसके जो डोर्स है वो ऑटोमेटिक ओपनिंग वाले नहीं होते, हम लोग को ओपन करना पड़ता है। सो ऑल दीज आर द वेरियस मॉडल्स ऑफ कार यू विल गोइंग टू लर्न इन द एम्बेडेड सिस्टम। तो इसके ऊपर से ही, मतलब ये जो है ना एम्बेडेड सिस्टम, ये कार का एग्जांपल दिया है, मतलब ऑटोमोबाइल में चला जाता है ये तुम्हारा कंसेप्ट, और इसके बाद फिर तुम्हारा ये जो कंसेप्ट है ना, आईओटी में चला जाता है, इंफॉर्मेशन ऑफ द थिंग्स। तो यहाँ पे इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में फिर तुम लोग सेम 5 में पढ़ोगे, और फिर उसके आगे फिर ये आता है, फिर मशीन लर्निंग है, एआई है, डेटा साइंस, ऐसा। तो आगे आगे जैसे जैसे हम लोग बेसिक से पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे तुम लोग मतलब एडवांस में जाओगे। ठीक है, एनी अदर Ma'am, क्वेश्चंस? one more doubt. हम्म, Yes. हाँ बोल Ma'am, बोल। what is the difference between machine learning, robotics, and artificial intelligence?
See, I already told you that artificial intelligence and machine learning is very closely related to each other. How it is closely related to each other? Because machine learning is a part of your artificial intelligence. Artificial intelligence में क्या होता है कि यहाँ पे तुम लोग को जो instructions है, अभी machine learning में machine learn कर रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करेगा, उसका जो ब्रेन है, जैसे इसमें 3 टाइप्स होते हैं एक्चुअली मशीन लर्निंग के, एक सुपर यूज्ड होता है, फिर अनयूज्ड रहता है। तो ये जो टेक्निक्स है वो ऑटोमेटिकली लर्न कर लेती है मशीन लर्निंग, और एक बार मशीन लर्न कर लेती है इंफॉर्मेशन एंड डेटा सेट एंड ऑल ह्यूज इंफॉर्मेशन, ये लर्न करने के बाद इसके ऊपर प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होगा मतलब कहाँ पे होगा, तो तुम लोग उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करोगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मशीन है उसका जो इंटेलिजेंस मतलब सेंस जो है वो यूज करके फिर तुम लोग यहाँ पे और एडवांस में यहाँ पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये मशीन लर्निंग का एक, मशीन लर्निंग जो है ना ये पार्ट है किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और रोबोटिक जो है ना, रोबोटिक्स में दोनों का मिक्सचर होता है, क्योंकि रोबोटिक्स क्या है, सेम टू सेम रेप्लिका ऑफ ह्यूमन बीइंग। जस्ट रोबोटिक्स में मतलब ऐसे भी नहीं बोल सकते कि इमोशंस नहीं होते हैं या आंखें नहीं होते हैं या कुछ बोल नहीं सकता है, एवरीथिंग इज देयर। रोबोटिक्स बोल भी सकता है, जैसे हम लोग बोलेंगे और तुम लोग एक्शन करोगे वैसा ही रोबोटिक्स परफॉर्म करता है। तो दैट कंसेप्ट इज नथिंग बट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम लोग इंटेलिजेंट है, ह्यूमन बीइंग इज इंटेलिजेंट पर्सन है, सबसे इंटेलिजेंट पर्सन ह्यूमन बीइंग ही है, लेकिन इसके कॉम्पेटिबल में अभी हमारा मशीन भी आ रहा है कि मशीन भी उतने ही स्मार्ट, उतने ही इंटेलिजेंस होते जा रहे हैं। और उसको कौन करता जा रहा है इंटेलिजेंस, ह्यूमन बीइंग। इंटेलिजेंट कौन करता जा रहा है, ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जैसे एक्शन करेगा वैसा ही तुम्हारा ये मशीन भी करेगा। बिकॉज द एबिलिटी ऑफ दैट मशीन इज दैट इट विल ग्रास्प द ऑल इंफॉर्मेशन from the user, from the human being, and it will store. लेकिन इतना कैपेबिलिटी जो है ना, स्टोरेज कैपेसिटी जो है ह्यूमन बीइंग के पास नहीं है, मशीन के पास है। millions billions of information can be stored in the machine, and that's why machine is the more intelligent. And this concept इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल उसी का ही नाम बोला है कि आर्टिफिशियल है, ये रियलिटी जो है कि रियल इंटेलिजेंस। अभी हम लोग का इतना एग्जांपल्स लाइव में पता है कि सबका इंटेलिजेंस हम लोगों ने पढ़ा है, अब्दुल कलाम। ओके, क्या है ये, रोल मॉडल। ओके, इंटेलिजेंस का इंटेलिजेंस है, मतलब उसके ऊपर कुछ ऐसा ये ही नहीं है कि हम लोग प्रेडिक्ट कर सकेंगे, इतना इंटेलिजेंस भरा था उनने। ठीक है, और वो सब स्पेस में, इधर नासा में, उधर उधर सब जगह यूज किया गया है उनका इंटेलिजेंस। तो सेम इंटेलिजेंस जैसे ह्यूमन बीइंग डिसाइड करता है, डिसीजंस लेता है, एक्शन करता है, एंड अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज, एक्सपीरियंस, whether the experience is the past experience or the future experience, means future predictions also. There is no any other software or there is no any other human being concept कि वहां पे future prediction होता है। लेकिन ऐसे some peoples are very मतलब उनको ये बोलते हैं, एलिगेंस बोलते हैं, उनके पास ऐसा इंटेलिजेंस है कि वो फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर लेते हैं, है ना। एक मूवी तुम लोगों ने देखा था ना इसके ऊपर का, यस, फ्यूचर प्रेडिक्शन वाला, कौन सा मूवी है, याद है? अरे फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकता है, देखा है कि नहीं? हेलो, यस मैम। तो उसमें भी ये कंसेप्ट है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स क्या है, अभी ये दोनों का मिक्सचर है, मतलब दोनों का कंसेप्ट, दोनों टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों यूज करके रोबोटिक्स में यहाँ पे
सब इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है एंड इसीलिए रोबोटिक्स भी ह्यूमन बीइंग जैसे ही बिहेव करता है. ऑल द इंस्ट्रक्शंस यू गिव द रोबोटिक्स इट विल डन इमीडिएटली. ऐसा नहीं कि वो थोड़ा धीरे धीरे करेगा, क्विक एक्शन नहीं होगा. इट इज नॉट लाइक दिस. खाली थोड़ा सा यहाँ पे स्लो स्लो इन द सेंस वर्किंग उसका स्लो नहीं है. जैसे अभी हम लोग फास्ट फास्ट चलते हैं, दौड़ते हैं, तो वो दौड़ता नहीं है, वो चलता ही है ऐसा. So this is what the difference in between this machine learning, AI and robotics. तो ये सब तुम लोग को ना ये हायर एजुकेशन में पढ़ने को मिलने वाले हैं. लेकिन अभी FI वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मे भी मिल भी सकता है, क्योंकि उनका सिलेबस FI वाले नहीं, कब अपकमिंग FI बैच, उनका सिलेबस अभी चेंज होने वाला है नेक्स्ट ईयर. तो फिर वो लोग भी थर्ड ईयर में पढ़ सकते हैं. तो तुम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में ये पढ़ सकते हो. फिर क्लाउड कंप्यूटिंग है, ऐसे बहुत सारे डेटा माइनिंग है, ऐसे बहुत सारे जो है ना ये कंसेप्ट तुम लोग को न्यू टेक्नोलॉजीज करके पढ़ने को मिलते हैं IT सेक्टर में. ओके तो मैं तुम लोग को अभी एक क्वेश्चंस का एक फॉर्म पोस्ट करती हूँ, तो तुम लोग फिलअप करके देना. ओके Okay, ma'am. एनी अदर स्टूडेंट हैविंग डाउट्स? नचिकेत? yes, TY No, ma'am. students? Okay. Okay, so how your session? How was your session? Whether it is fruitful, understood? Yes. Yes, ma'am. It's very helpful Understood. and interesting. Yes. Okay, thank you. Okay, so in future also, if you want to ask anything about machine learning, you can ask. I will help you. Okay. Okay, so अभी हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं. नितिन अभी क्या ऐड हो गया तुम?